दोस्तों Good. स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में और हमारी इस पॉडकास्ट एमएमए इंग्लिश में। UFC 283 इज इन द बुक्स। UFC 283 पे पर व्यू खत्म हो चुका है आज सुबह एंड व्हाट अ फिनाले वी गॉट। दो हमें नए चैंपियन मिले हैं, साथ में कंटेंडर्स इन विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन और विमेंस और मेंस वेल्टरवेट डिवीजन अगेन। साथ ही में कुछ Mm, फन फाइट्स देखने को मिली प्रीलिम्स में। तो हम इस yeah. पूरे इवेंट का एक रिकैप करने वाले हैं। एज ऑलवेज मेरे साथ है मेरे को होस्ट मिस्टर डॉनी। What's up, Amit? I'm just sitting, man. I'm very happy today because I woke up early and it was worth it. Enjoyed the fights and all. And yeah, you're right. We got another probable contender in the welterweight division, as well as the women's strawweight. Was it strawweight or flyweight, man? It's strawweight, right? It's raw weight, yes. 115, Yeah. 115, yes, yes, raw weight. No, it was No, no, flyweight. no, It no, was no, 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 it's no, flyweight. no, it's not 1 5, it's 1 to 5, I believe. Yeah, it's flyweight. So yeah, we are we got two probable contenders in women's flyweight and the men's welterweight, and then we got to see Johnny Walker put on a hell of a Oh, performance. Rodrigues with some hellish Yep. power. Yeah, and then some really exciting fighters that I saw in the prelims. I mean, I didn't really. Did you watch the entire fights in the Not prelims? entire fights, but here and there, here and there. So साथ में Mauricio Shogun हुआ रिटायरमेंट फाइट अपनी ले चुके हैं। ऑल्दो एज यूजुअल जो इस पूरे साल पिछले 1 साल से हो रहा है, रिटायरमेंट फाइट सब लेजेंड्स हारते हैं अपनी, और शोगन अपनी फाइट्स हारे हैं। तो इस पूरे कार्ड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड लेट्स जंप स्ट्रेट टू द मेन इवेंट ऑफ UFC 283, Yeah. Jamahal Hill Sweet Dreams against the aging and ever tough You screwed up Mr. that name once Glover again, man. Teixeira. It's Jamal Hill. Actually, I don't know. I thought it was pronounced Jamahal Hill, but I guess it's Jamal Hill, right? Jamahal Hill. Okay, Uh, whatever. Not sure. It's Jamahal Hill, I believe. चलो कोई अरे बात नहीं. जमाल बोलते हैं यार. Let's talk about the fight. Yeah. I think it was straight up domination from the word get go. शुरुआत से ही एक domination था fight का. Donny, how did you see the fight? Mm, I wouldn't say, yeah, nah, man. Honestly speaking, I feel so emotional about that fight. I mean, I'm happy for Jamal Hill. The main reason why I'm happy for Hill is that I followed his career. He's one of the guys whom I've never missed a fight of. Even though I wouldn't get to see it at the actual time when it's happening, I would always watch it like maybe sometime later after lunch or something like that. So this is one guy whom I've like this guy and GD. These are two guys whom I follow very ardently. So yeah, I mean, for Glover, everybody loves Glover, right? He's a consummate professional and such a nice guy. Even that day, he even gave me a little shout out on Instagram as well. He posted my story. I was very happy about that. So yeah, and yeah, man, it's like seeing seeing Glover get beat like that. Yeah, I guess the judges were right on the scorecard. Man, he was getting beat from pillar to post. Like, I'm not going to say that Glover didn't have his moments. He did have his moments, but He Jamal went was too strong. much. He was too much for him today. He was really, really too much for him. I'm just surprised how the hell he didn't get knocked out. What about you? What do you think? मेरे हिसाब से भी I think the fight was a total domination from the word get go. शुरुआत से ही the whatever the punches जितने भी land किए, can you hear me? I'm sorry. Yeah, I can hear you. ओके, सो शुरुआत से जितने भी पंचेस लैंड किए थे, और मैं एक चीज मैं जरूर देख रहा था कि ही वाज ट्राइंग टू लैंड दोस अपरकट्स, और कमेंटेटर्स ने इस बात को हाईलाइट Yeah, किया। yeah, yeah. कमेंटेटर्स ने इस चीज को हाईलाइट किया, जो अपरकट्स वो लैंड कर रहे थे, इट वाज एक्टिंग एज अ प्रिवेंशन अगेंस्ट दोस टेक डाउन्स, और टेक डाउन Mm-hmm. में भी Yeah, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो। टेक डाउन्स के लिए गए बहुत बार, लेकिन टेक डाउन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे उनके, yeah. एंड दिस वाज वन He ऑफ द did. रीजन। He did secure two or three takedowns, I believe. He even had सेकंड some राउंड, ground control, but सेकंड फोर्थ but राउंड, यस। but Jamal he was on a mission. I felt like that look on his face right from the as soon as he made the you know but he walked to the cage from that time, and that guy was fucking locked in, man. See the look in his eyes. See the look in his eyes before the fight started. That guy, he came to that kill or be killed. It was, he 100%। carried that kind of look in his face. And yeah, I mean, he even though Glover got the takedowns, but Jamal was not staying down.
You could see, I mean, he scrambled and did everything he could to get back up. And it's not just the thing. It's not just just the uppercuts. Even the the head kicks were also doing a lot of damage. He utilized almost everything. Like all his, I mean, all his striking techniques. He utilized everything to the end. Man, you could see the effects of everything that landed in the face of Glover. Oh my God, I've, uh, एंड it was a beatdown. उन्होंने ये चीज खुद कही कि आई एम टू गुड फॉर माय Yeah, व्हाट वाज द हिस्ट्री something he told, I'm too good for my own body, something like that. I'm forgetting the quote. So लेकिन we should I'm too again, tough for my own good. That was what he said. या आई एम सॉरी आई बुचर्ड इट. लेकिन अगर आप उन्हें देखें तो टफनेस जो हार्ट उन्होंने दिखाया है, एज ऑलवेज वो हमेशा दिखाते हैं इस चीज को. एंड आई वाज मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ उनके लिए फाइट खत्म होने के बाद कि उन्हें इतना ज्यादा डैमेज लेना पड़ा अपनी बॉडी में. एंड 43 इयर्स की उम्र में आई थिंक योएल रोमेरो इज द ओनली वन जो Mm, इतना आई थिंक ही इज 46 जो mm, इस एज तक खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं और हाई लेवल पे खेल रहे हैं. तो एक हाई mm. लेवल पे एक यंग अप एंड कमिंग फाइटर जमाल हिल के अगेंस्ट साथ आप फाइट से फाइट कर रहे हो. तो ही हैज टेकन टू मच डैमेज एंड Yeah, होपफुली हैप्पी रिटायरमेंट टू हिम. एंड yeah. प्रोबब्ली एक बहुत ही बढ़िया कोच आगे वो बनेंगे फॉर पोआतान परेरा और भी जो उनके साथ उनके कैंप में और फाइटर्स हैं उनके लिए. He's already a good coach, man. Come on, he coached Ferreira and he won his middleweight title. So he has the he has a talent to be a coach for sure. And on top of that, he's such an experienced fighter in the game. I एंड mean, okay, जमाल हिल की अगर बात करें तो बहुत शार्प, बहुत ही ज़्यादा जैसे कि मैंने कहा फ्रॉम द वर्ड गेट गो बहुत ही एक्टिव रहे वो पूरी फाइट में. अपनी स्ट्राइकिंग से उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया मुझे. मुझे लगा नहीं था, आई थॉट एक ही इज जस्ट अ पावर पंचर, अनदर पावर पंचर इन mm, लाइट हेवीवेट डिवीजन. बट mm, इतने टेक डाउन्स डिफेंड करना एंड जो एंड्योरेंस जो उन्होंने दिखाया अपना, मुझे लगा था 4th-5th राउंड में आके ही माइट गैस आउट, बट ये भी नहीं mm, हुआ उनके साथ. बहुत बार उन्होंने टेशीरा को वॉबल करा फीट पे. yeah, मतलब एक ऑल अराउंड गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम जमाल हिल. And इसीलिए he's a champion. And yeah. Teixeira, as you only said, he's too good for his own Too body, tough for his own too good. too tough for his own good. So um, a little bit sad for Teixeira, but a very hopefully now एक लॉन्ग लास्टिंग चैंपियन हमें मिलेगा जो कुछ समय तक इस डिवीजन में रेन करेगा. Yeah, I hope जॉन so जो too. I hope so too. But that light heavyweight division since John Jones left it, it has blown wide open, man. wide Imagine the open. number, imagine the number of champions, and yeah, the rest of the contenders who will be coming up. You have Magomed Ankalaev and then Giri. Giri already called Jamal Hill out. Yuri Prohaska, yeah. Yeah, yeah. And I think if there's no title fight that happens like as soon as Giri recovers, he'll get that title shot for sure. So हो सकता है. yeah, I mean, this is what I love about the sport of MMA, right? For the best one to fight each other. Thank God for MMA, man. MMA is Thank safe. God MMA and happy retirement to Glover Teixeira. चलिए Yeah, आगे बढ़ते हैं and let's talk about the new bantamweight, sorry, the new flyweight champion of the exactly. UFC. That is Brandon Moreno. Brandon Moreno ने एक quad इनकी चौथी फाइट थी ये ड्यूस लेगेरा फिगेरेडो के साथ. एंड इस फाइट के साथ ही एक चीज और हाईलाइट हो चुकी है कि फिगेरेडो फाइनली फाइनली बैंटमवेट डिवीजन में मूव कर रहे हैं आफ्टर हिज Mm, लॉस टू ब्रैंडन मरेनो. yeah, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल टू ब्रैंडन मरेनो. एक बहुत ही बढ़िया फाइट उन्होंने करी, एक लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट गेम प्लान के साथ वो इस फाइट में yeah, आए. लिटिल yeah. बिट रेसलिंग हैवी गेम. Mm, एज यूजुअल उनकी बॉक्सिंग तो शार्प रहती ही है, लेकिन yeah, एक जो रेसलिंग हैवी गेम वो इसमें लेके आए. बार बार टेक डाउन खेले गए एंड एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड डॉक्टर स्टॉपेज देखने को मिला जब फिगरेडो की आंख के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज हो yeah, चुका था. yeah. एंड एज दे से विवा मेxico, we have the new flyweight champion Donny. Everything that Brandon did today was just on point, man. It was just so on point, right from the takedowns and then to the strikes. He was outclassing. He was like, yeah, like I said, he was outclassing Figueiredo everywhere. Till for as long as the fight lasted, Brandon was winning that fight. If that fight lasted for 3 rounds, Brandon would have won. And let me just add one more thing again. Today, both Brazilian champions they lost. Imagine how would the fans be feeling, right? फैंस ने क्या फील किया ये तो आपको दिख गया था जब ब्रैंडन मरेनो के ऊपर वाइन से लेकर बियर से लेकर पॉपो से सब फेंके गए हैं while That is knocking fine. out. That is fine. Imagine they left, man, when Glover was giving his post-fight speech. Which That is the worst. See, Kobe ये Covington was right. They suck.
कोहली का विंटर ये तो आपको फुटबॉल स्टेडियम्स में ही देखने को मिलता है जब हमारी टीम हार रही हो 3-0 से और 85 मिनट्स चल रहा है और आप स्टेडियम छोड़ के जा रहे हैं। इमेजिन हाँ कोई न्यूकासल की तरह आके 4 गोल मार दे 5 मिनट में। बट हाँ कमिंग बैक टू यूएफसी, नाउ आई थिंक वी क्लियरली हैव एक बंदा जो 125 डिवीजन के टॉप पे है। लॉन्ग आफ्टर डिमिट्रियस जॉनसन जब से छोड़ के गए हैं, उसके बाद से yeah, किसी बंदे ने इतना डोमिनेट नहीं करा है। आई थिंक हेनरी साउडो ने थोड़े टाइम के लिए किया, बट yeah, वो सिर्फ 2 फाइट के लिए था। लेकिन मोरेनो पिछली 4 फाइट्स में जिस हिसाब से उसने परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक ही स्टैंड्स वे अबव, शोल्डर्स अबव एवरीवन एल्स, एंड ही इज अ टॉप between डॉग। ही इज अ टॉप डॉग एट 125 पाउंड वेट डिवीजन राइट नाउ। between Moreno and Figueiredo, this I mean these four fights, the title has been passed like it's like a game of hot potatoes, right? Yes. You catch that, you catch that, you catch that. The title keeps on going from, I mean, between two people, it keeps on going from one hand to the other. I mean, it's been really interesting, man. And yeah, today even Luke Thomas said that both fighters have improved a lot. And you could see Figueiredo improving. He has improved a lot, and so has Moreno. But I feel like after seeing him today, I feel like that massive weight cut is starting to affect him. And then Definitely. and then at the age as well. So yeah, I I would have like I would have preferred a much more competitive fight, but then again, it's a fight game. It's unpredictable. We don't always get what we want. I enjoyed it though. I enjoyed the fight for as long as it lasted. So yeah, एंड congratulations to Brandon Moreno. एंड फिगरेदो की ये करियर की पहली टीकेओ लॉस है, और उनकी Mm. पहली सबमिशन लॉस भी मोरेनो के अगेंस्ट ही थी। तो मोरेनो आई थिंक ही हैज अ लिटिल बिट ऑफ अपर हैंड अगेंस्ट फिगरेदो। Mhm. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 16th फिनिश है ये ब्रैंडन मोरेनो के अपने एमएमए करियर की। सो दैट्स अगेन ह्यूज कमिंग इन द फ्लाईवेट डिवीजन, बिकॉज़ फ्लाईवेट Yeah, डिवीजन में आपको डीजे के टाइम से ही इतने ज्यादा डिसीजंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं इंस्टेड ऑफ फिनिशेस। yeah, that is true. That is true. Unfortunately, that is true. But then again, BG is still unbeatable in my books. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, जो पंच ब्रैंडन मोरेनो ने किया था Yeah, मोरेनो फिगरेडो के ऊपर कनेक्ट, उसके ऊपर उसके प्रोटेस्ट किया था फिगरेडो yeah, ने। एंड आई yeah, थिंक अगर वो प्रोटेस्ट नहीं करते तो वो टेक डाउन में नहीं जाते वो, yeah, मेरे हिसाब से। अगर वो yeah. प्रोटेस्ट नहीं करते तो मे बी एक स्टैंडिंग गेम में रहता तो कुछ और देखने को मिलता। लेकिन उसके बाद आई थिंक द गेम शिफ्टेड स्लाइटली बिट। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आई पोक हुआ है वहाँ पे। मुझे ये लगता है 100% आई फील एक आई पोक हुआ होगा, बिकॉज़ I- उनका जो पंच उन्हें पड़ा उसमें भी उनका थंब अलग था और पंच पूरा लगा था। तो आई exactly. थिंक I feel that at that moment of time, Figueiredo was looking for, टुवर्ड्स द रेफरी। who was the referee. Like he was like, gamesmanship. See, he did an illegal move, but at the same time, even Figueiredo also did an illegal move. Remember, he hit him with his feet हाँ, when they were on the ground. येस, येस। So, but yeah, that left hook, it really affected him, and it was not just because of that. The whole fight, it was be. I mean, if you look at it from a neutral perspective, Brandon was winning that fight. I said it earlier. I'm going to say it again. Brandon was winning that fight. और या पूरे 3 राउंड के बाद भी आई थिंक अगर 3 राउंड फाइट होती तो इट वुड हैव बीन स्ट्रेट अवे 30-26 और लीस्ट 30-27 का होता ये पूरा फाइट। तो अगेन एज ऑलवेज मेक्सिको के पास दोबारा से अपना एक चैंपियन है इन यूएफसी एट द हाईएस्ट ऑफ द स्पोर्ट, फ्लाईवेट चैंपियन ब्रैंडन मोरेनो। आगे बढ़ते हैं एंड And let me just ब्राजीलियन। let me just add one more thing about Mexico as well. So now they have Brandon Moreno as as the flyweight champion. Yair is going to be fighting इंटर in, for the interim featherweight title फेदरवेट। against Josh Emmett, and then Alexa Grasso, she'll be fighting Valentina for the women's flyweight, and then Irene Aldana, she'll be fighting Amanda Nunes for बैंटम वेट for women's डिवीजन। bantamweight. So there's a lot of good things going on for Mexican MMA, and damn man, I'm really happy. I'm really happy. I like Alexa Grasso. I mean, obviously because she's cute, and I mean, first reason is because she's cute, and the second reason is because she's a very, very good fighter. She's improved so much. You know, from the time that we saw her, she's improved so much. Like all those, like I'm glad that she moved up to flyweight. Those weight cuts were not doing her any good, and as soon as she moved up to flyweight, I was like, ah, this is gonna be great. Now she's gonna be much more consistent. She's gonna be able to show up more to fights and all. So yeah, and yeah, it's been a good move for her, man. So I'm looking forward to seeing her fight. Obviously,
Because Shevchenko is my favorite fighter, so I'm gonna be. I, I mean, Shevchenko, I love her so much. She's an excellent fighter, an excellent dancer. What else do you need? Nothing more, So, nothing less. so yeah, and she's an entertainer as well. Like, with the way she fights, not because of how she dances, but with the way she fights. So yeah, man, 100%. it's चलिए a great time. It's a great time to be a fight fan. It's always, but at the end of the day, it's always a great time to be a fight fan. चलिए इस फाइट कार्ड में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास फाइट थी गिलबर्ट बर्न्स और नील मैग्नी के बीच एंड ब्यूटीफुल सबमिशन विक्ट्री गिलबर्ट बर्न्स ने ली है पहले राउंड में और नील नील मैग्नी एक आई वोंट से लेट रिप्लेसमेंट फाइट बट बहुत लेट अनाउंस हुई थी ये फाइट और गिलबर्ट बर्न्स ने इस फाइट को जीता है अगेंस्ट नील मैग्नी प्रोबब्ली ये हम सब फिगर आउट जब ये फाइट रहा हम फिगर आउट कर चुके थे कि फाइट कैसे एंड होगी हुआ भी वही जो मैंने सोचा था इस फाइट के लिए लेकिन इतना जल्दी हुआ ये थोड़ा सा शॉकिंग लगा मुझे सो गिलबर्ट बर्न्स प्रॉप्स टू हिम पहले ही राउंड में उन्होंने इस फाइट को फिनिश किया एंड आई थिंक जब से वो वेल्टरवेट डिवीजन में आए ही 7-2 ही 7-2 एंड हमजा चिमाएव और कमारू उस्मान सिर्फ दो फाइटर्स थे वो हारे सो that shows the levels that shows the level of this particular fighter पहले वो वेट कट कर रहे थे एंड डैन हुकर जैसे फाइटर से हारे थे लेकिन अब आप उन्हें देखिए ही इज लूजिंग ओनली टू द क्रीम ऑफ द क्रॉप ऑफ द वेल्टरवेट डिवीजन No, don't talk shit about Dan Hooker. Dan Hooker is a people's fighter. He's my favorite, one of my favorite fighters. I'm not shitting on him. I'm just saying that Dan Hooker saying Why did you say Dan Hooker जैसे fighter से हारे? What do you mean by that? because he was a 145 pounder. एक समय पर 145 pounder थे वो. 155. He used to fight in 145 also. Oh, He started in 145 pound division, then moved up to 155, then came back down to 145, and now he's again in 155. I didn't know that, so I'm sorry for that. But okay, yeah, you're right, man. I thought Neil Magny would do much better than how he did today with his height advantage and reach advantage. But damn, Gilbert is just too good. His ground game is just next level. Seriously. As soon as Gilbert got the takedown, I knew it. I knew that it was the beginning of the end. But we could see that the guy he's such an experienced fighter, and he's especially in the ground. Like, you could see how patient he was. When he had that side control and when he slid from left to right, it was like butter, man, smooth as butter. It was it was when you see something, when you see someone do something that they're good at, right? They make it look so beautiful and so easy. And that was what 100%, that was 100%. what Gilbert Burns did, and man, And उन्होंने इस फाइट में कुछ किया ही नहीं. आई थिंक राउंड शुरू हुआ उन्होंने डिस्टेंस क्लोज किया उन्होंने टेक डाउन लिया एंड उसके बाद वो अपने क्राफ्ट पे लग गए जो उनका ब्रेड एंड बटर है दैट इज बीजेजे और आज नहीं तो कल मतलब इस राउंड में नहीं तो अगले मिनट में सबमिशन आना ही था yeah, ये मुझे लग ही गया था yeah. There's levels to grappling, एज man. डीसी ने कहा लेवल्स टू दिस गेम There's levels to this game, seriously. And when it comes to grappling, Gilbert Burns is in a whole another level. People, I've seen some people talk shit about him and his grappling and all. Like, what the fuck are you talking about? Like, you're talking एंड out of your ass. forget grappling. He's a very good boxer. He's a very good boxer. Very Mm. good boxer. राफेल कोडेरो के साथ अगर आप ट्रेन कर रहे हो, if you're training with Henry Hooft, आप you are one of the very best in the game. Ask Kamaru Usman. Ask the other guys at Kilcliff, formerly known as Sanford. Yeah. So yeah, man, congratulations to Gilbert Burns. I hope he gets that fight against Colby Covington, although I don't know. I think UFC is getting for Colby versus Khamzat fight. So let's see what happens. I'm I not hope. sure कोल्बी के साथ क्या होने because it's been long जब कोल्बी फाइट किए एक साल से ऊपर हो Yeah, चुका है कोल्बी को फाइट किए हुए. yeah, It's been very long. तो होपफुली yeah, हमें कोल्बी कविंगटन देखने को मिले फाइट गेम में बट यू डोंट नो क्या होने वाला है इस डिवीजन में. yeah, yeah. So yeah, when it comes to the title fight, that is set Leon versus Usman. But after between Colby, Gilbert, Khamzat, and और yeah, between मुझे तो ये लगता है कि UFC you know 286 what, you can throw another name in there: Colby, Khamzat, Gilbert Burns, and Bilal. बिलाल मोहम्मद इन I चारों की want, I, फाइट wa- इन I want, इन I चारों right now I want to because both Bilal and Gilbert they are on a winning run. I want to see Gilbert and Bilal fight. That would be such a nice. माय गॉड वर्ड्स आउट ऑफ माय माउथ आई थिंक UFC 286 में हमें तीन वेल्टरवेट फाइट देखने को मिल सकती है एटलीस्ट तीन में से अगर दो भी हमें मिल जाए तो विल बी मच मच मोर देन हैप्पी. एक तो हमें मिल ही रही है जो है Yeah, द लियोन एडवर्ड्स Usman वर्सेस versus Edwards. Yeah, उस्मान वर्सेस एडवर्ड्स और अगर ये yeah, दो फाइट और वेल्टरवेट डिवीजन में हमें मिल जाए दैट इज ऑल वी वांट फ्रॉम दिस वेल्टरवेट डिवीजन. हमें yeah, पता चल जाएगा कौन कितने गहरे पानी में है.
Yeah, इन yeah, फाइट्स for के sure. बाद. एंड For sure, 100% for sure. अगर कोलबी कॉमिंगटन हमजा का मैच अगर हो गया तो नंबर वन कंटेंडर वहीं से निकल रहा है. दैट इज 100% Yeah, गारंटीड. yeah, दैट इज गारंटीड. अगर वो फाइट नहीं हो रही है तो आई थिंक बिलाल मोहम्मद शुड फाइट yeah. इधर हमजा चिमाएव और Gilbert गिलबर्ट Burns. बर्न्स. अगर वो जीतते हैं तो टाइटल शॉट इज हिज, जो भी जीतता है Yeah, उसके अगेंस्ट. तो yeah, बहुत ही ज्यादा इट्स अ वेरी मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर ये फाइट होती है तो आगे. yeah, yeah. Ah, man. So, चलिए do you इस want do you want to talk about Andrade versus Lauren Murphy? Oh my, 100% 100% जेसिका Jessica. अंद्राज. जेसिका अंद्राज ने लॉरेन मर्फी को एक 30-25 30-25 एंड द अदर वन वाज 30-27 और 30-26 आई थिंक एक यूनानिमस डिसीजन से रहा. एंड क्या ही बोले इस फाइट में. आई थिंक सम 11-12 टेकडाउन्स अटेम्प्ट किए थे लॉरेन ने और इनमें से सिर्फ एक ही सक्सेसफुल हुआ जिसको भी रिवर्स कर दिया था Yeah, exactly. जेसिका अंद्राज ने. और आई थिंक 300 प्लस स्ट्राइक्स उन्होंने लगाई हैं इस पूरे इवेंट में, Yeah, इस पूरी फाइट में. and दैट इज सो मच. 213 significant strikes. यस यस यस. 213 significant strikes. Let me say. I wrote down. 230. 231 31. 230. Okay. 148 signature head strikes. 21 significant body strikes. 44 leg kicks. Jesus Christ. She beat the hell out of her. My God, man. This Jessica Andrade, she's a pocket full of dynamite, bro. And damn, she was showcasing all of her striking skills today. It was like, look, एंड I'm gonna यूएफसी show you. फ्लाइवेट डिवीजन का ये रिकॉर्ड है बाय द वे. Yeah, 231 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स. yeah. अमेजिंग अमेजिंग मैन. My God. And let me tell you, Lauren Murphy is no slouch either. I mean, she stood 100%. she stood there, but I felt like, the referee should have stopped that fight. Why didn't he stop? I don't know. He should have stopped that Glover fight as well. या Glover मे बी. was getting beat up, man. That referee, आई थिंक he was. मेरे हिसाब से लॉरेन मर्फी के कॉर्नर ने बहुत अच्छा बोला था कि स्ट्राइकिंग रेंज में मत जाओ, टेक डाउन करो. लेकिन टेक डाउन कहाँ से करें जब टेक डाउन हो ही नहीं पा Exactly. रहा है. यू हैव टेकन 12-13 अटेम्प्ट्स और उसमें से एक सक्सेसफुल जो रिवर्स हो गया. एंड I guess at some point of time over there, exactly, शी लॉस्ट होप. he lost hope. शी lॉस्ट होप. Nothing was working. Nothing was working for her, man. In that particular fight, nothing, man. राउंड स्टार्ट हुआ और जो पहले राउंड की शुरुआत में जो लेग किक्स लगाई हैं जेसिका अंद्राज ने, दैट वाज ब्यूटीफुल. एक शार्पनेस, मतलब उनके पंचेस जिस स्पीड से आ रहे थे, स्पीड का अंतर आपको साफ नजर आ रहा था. पावर Mhm. का अंतर आपको साफ नजर आ रहा था. द ओनली थिंग जो थी वो लॉरेन मर्फी की टफनेस. Yeah. लॉरेन मर्फी की टफनेस थी. बाकी उसके अलावा तो कुछ हमें देखने को मिला ही नहीं लॉरेन मर्फी की तरफ से. एक She सिंगल was, वे ट्रैफिक, सिंगल वे रोड जा रही है. एंड mm, पूरा she पूरा was, फाइट ऐसे ही कटा. she was also too tough for her own good, man. टू टफ फॉर हर ओन गुड. यस. But I hope after that beat down, I hope that she's gonna be okay. I mean, she looked in bad shape after that fight ended. But congratulations to Jessica. She's एंड another she's होपफुली another होपफुली another उन्हें. female fighter I love watching so much. So yeah, congratulations to her. What were you gonna say? Sorry. मैं तो ये बोलने वाला था कि नाउ द टाइटल फाइट विद जेसिका, सॉरी, द जो टाइटल फाइट अब उन्हें मिलेगी अगेंस्ट वैलेंटिना शेवचेंको. इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी क्या होता है उस फाइट में. Yeah, probably like after the Valentina versus Grasso fight, that might happen. होपफुली होपफुली हमें देखने को मिले, क्योंकि मैं तो बहुत समय से जो फाइट देखना चाह रहा हूँ वो है अमांडा नूनेस वर्सेस वैलेंटिना शेवचेंको. मेरे हिसाब से शी इज ऑलरेडी 2-0. वैलेंटिना की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो आई थिंक द थर्ड फाइट शुड बी द नेल इन द कॉफिन, बिकॉज दो फाइट में दो जजेस के डिसीजन की वजह से वैलेंटिना हारी हैं. सो Mm. लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन द थर्ड फाइट जब भी हो ये. एंड आगे बढ़ते हैं. और इससे पहले फर्स्ट फाइट जो पेपर पे हमारे पास थी, अगेन एक फर्स्ट राउंड टीकेओ विक्ट्री. फर्स्ट राउंड टीकेओ विक्ट्री पॉल क्रेग के अगेंस्ट जॉनी वॉकर की. अमेजिंग फिस्ट, अमेजिंग हैमर फिस्ट. और हैमर फिस्ट में इतनी पावर जनरेट करना, दैट इज हैट्स ऑफ टू जॉनी वॉकर. जॉनी गो अहेड. Johnny Walker has always had power in his hands, man, And knees and feet. and he's a very very creative striker. You saw it today. He improvised on the go. He got the head kick and yeah. Sorry. When Paul Craig got his kick and yeah, Johnny just improvised from there and damn. और जिस So मैसिव I पावर felt की. like at that. See, I like Paul Craig. Okay, I really like Paul Craig. I wanted him to just let go of the damn leg and back off. He kept on holding on. Why would you do that? That guy was landing on you like
That is what Paul Craig does every time. He always eats those blows. But when you have a guy like Johnny Walker who has power in his hands, that is a very stupid thing to do. I'm absolutely gutted for Paul Craig. But yeah, I'm happy as well for Johnny Walker now that he's back in. I hope he puts on a winning run because he's a very he's जॉनी वॉकर की लगातार 2 विक्ट्रीज रही हैं पहले ही राउंड में एंड आई थिंक उनकी जितनी विक्ट्रीज रही हैं सारी फर्स्ट राउंड स्टॉपेज ही रही हैं। जितने भी yeah यूएफसी में विक्ट्रीज रही हैं जॉनी वॉकर की सब पहले राउंड स्टॉपेजेस रही हैं उनकी। yeah तो yeah. आप देखें सो मच Even क्रिएटिव the फाइट last fight against Kutilava also he won it in the first round. So हाँ, yeah, yes, he's on a good run. So yeah. he's on a good run। प्लस एक चीज और इंटरेस्टिंग आपने नोट की होगी, मीशा सरगनाफ के साथ जब इनकी पहली फाइट हुई थी तो उसमें इन्होंने अपना हैंड इंजर किया था Exactly, man. While celebrating, व्हाइल सेलिब्रेटिंग। that इस he बार did that fish dance, right? यस द हुक डांस या इस बार वो पहले नीज पे गए फिर उन्होंने ये डांस करा, आपने देखा होगा डांस एंड इट वाज Yeah. इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट मीशा सरगनाफ सेलिब्रेशन जब उनका हैंड इंजर हो गया था। तो When I saw that celebration, I was like, this fucker was at it again. But then again, Johnny Walker is, you know, he's a crazy guy, he's a crazy guy, he's let's a really guy. And sum it up। it's fun, man. He's fun. I just don't want him to get hurt. Like, once again, and thank God he didn't get hurt. Thank God he didn't get hurt. Seriously. तो गाइस ये So, जो ये था पूरा रिव्यू हमारे यूएफसी का जो पे पर व्यू इवेंट था उसका, जो टॉप 5 फाइट्स आपको देखने को मिली उसका। इसके अलावा प्रीलिम्स और में जो हमें फाइट्स देखने को मिली उसमें मेन अट्रैक्शन जो था वो था शोगन, मॉरिसियो शोगन हुआ, जिनकी ये आखिरी फाइट थी यूएफसी में एंड रिटायरमेंट फाइट थी अगेंस्ट इहोर पोटेरिया। yeah. एंड एज ऑलवेज जो हो रहा है इस पूरे पिछले 1 साल से, रिटायरमेंट फाइट कोई लेजेंड जीतता नहीं है। अगेन इहोर पोटेरिया ने एक टीकेओ विक्ट्री ली अगेंस्ट शोगन मारिशियो हुआ, पहले राउंड में ये विक्ट्री उन्हें मिली। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा प्राइड के टाइम से अभी तक फाइट करने वाले एकमात्र फाइट शोगन हुआ है। एंड बाय दैट आई मीन जो एक्टिवली प्राइड में फाइट कर रहे थे, नॉट लाइक नेट डियाज या फिर रॉबी लॉलर जो एक फाइट के लिए वहां फाइट करने गए थे। Mm. सो हैट्स ऑफ टू दिस लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट। ऑलरेडी यूएफसी हॉल ऑफ फेम में है वो, Yeah. ऑलरेडी यूएफसी ने 2 बार उन्हें हॉल ऑफ फेम में नॉमिनेट किया हुआ है। सो इट्स अमेजिंग टू सी द करियर अगेंस्ट इट्स नॉट अमेजिंग बट एक ऐसा मोमेंट है जो हमारे लिए खुशी का भी है और दुख का भी है। इट्स अ बिटर स्वीट मोमेंट फॉर अस It is a एंड bittersweet. It is a bittersweet moment because Shogun was one of the last of the old guard, who came यस from those pride days. गुड चॉइस ऑफ So वर्ड्स। yeah, he's exactly. I mean, these are not my words, but I think somebody said it. Was it Laura Sanko or DCA? But yeah, he's the last of the old guard. So it's been an honor and a privilege to see him fight. I've seen him win a few fights. I've seen him lose a few fights. But yeah, I mean, it was fitting to see him retire in his own home nation in Brazil. But I mean, to see a legend lose, nobody likes that. But then again, that is a fight game. So congratulations. And so I just want to say, from my side, I wish Shogun a happy retirement. He's one of he's I mean, he's one of the biggest names in the sport. He still is. He's a legend that will never go away. He's a Hall of Famer, and yeah, man, he's paved the way for so many guys. स्पेशली फ्रॉम ब्राजील, Yeah, for real. Yeah. स्पेशली फ्रॉम ब्राजील वैंडेले सिल्वास एंड जो भी इनके बाद आए इस गेम में। और मुझे मुझे अभी भी याद आता है जो सॉकर किक्स उस प्राइड में लगाते थे, ये जो हवा में कूद के जस्ट लाइक हबीब नurmagomedov ने डिलन डैनिस के ऊपर कूदे थे, वो सीन मुझे अभी भी याद आता है शोगन हुआ का। शोगन मैन, प्राइड नेवर डाइज, शोगन नेवर डाइज, लेजेंड नेवर डाइज। And एंड it's such a dope ass name, right? Shogun. You know the meaning of Shogun? नो King. King or an शोगन emperor, something like that in Japanese. Yeah. ओके। एंड अगर उनके जो ओपोनेंट है उनकी अगर हम बात करें तो उनके ओपोनेंट इज वेरी एक बहुत ही बढ़िया उससे आ रहे हैं वो। आई थिंक अपना जो डेब्यू था वो हारे थे यूएफसी Yeah, yeah, 275 277 में आई बिलीव। yeah. लेकिन इस फाइट में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उनको, और पोस्ट फाइट उन्होंने सेलिब्रेशन में उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया शोगन हुआ को। बाद में अपने आप को द न्यू उन्होंने ये भी बोल दिया कि समथिंग अलोंग द लाइन की आई एम द फ्यूचर ऑफ यूएफसी इन दिस डिवीजन। Mm. होपफुली होपफुली एक फाइट आप हार के आ रहे हैं, दूसरा आप एक वॉश्ड अप बोलना चाहूंगा मैं विद मच रिस्पेक्ट टू शोगन हुआ। तो लेट्स सी इफ यू आर द रियल डील इन 2-3 फाइट्स। देखते हैं आप कहाँ पे Yeah. होते हैं। It's एंड gonna be it's gonna be interesting because even this guy is also quite experienced. Sorry, yeah, what was his name? इहोर Ihor. इहोर पटेरिया। Ihor Petieira, yeah. So he's quite experienced. So don't just write him off so early. नहीं नहीं, I आई know एम that नॉट राइटिंग हिम, there जस्ट there there are plenty of people I'm throwing caution to the wind, yeah। who've lost their debut Debuts। fights in the UFC and still go on to do good things, great things.
So yeah, let's wait and see what happens. लेट्स वेट एंड सी। एंड इसके अलावा थियागो मोइसेस की लाइटवेट में सेकंड राउंड में जीते हैं। ब्रूनो फरेरा रोबोकॉप को नॉकआउट किया उन्होंने। एंड Yeah, एज ऑलवेज सॉरी, बहुत ही हाउ शुड आई से, द बॉनफिम ब्रदर्स, बहुत कम देखने को मिलता है दो भाई एक ही कार्ड पे फाइट कर रहे हैं, और दोनों के दोनों नॉकआउट, दोनों के दोनों फिनिशेस लें अगेंस्ट देयर ओपोनेंट। तो गैब्रियल बॉनफिम ने वेल्टरवेट डिवीजन में, और उनके छोटे भाई Ishmael. इस्माइल बॉनफिम ने लाइटवेट डिवीजन में, दोनों भाइयों ने जीत दर्ज की। एंड इस्माइल के बारे में बोलना चाहूंगा, अर्ली प्रीलिम्स में फाइट कर रहे थे अगेंस्ट टी रेक्स टेरेंस मैकेनी। Yeah, I'm not sure टेरेंस मैकेनी को क्या व्हाट इज हैपनिंग विद हिम। yeah, बैक टू बैक yeah. लॉसेस उन्हें मिली, जबकि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 3-4 फाइट विन स्ट्रीक पर थे टेरेंस मैकेनी। लेकिन एक फ्रीकिश नी, I'm It not was a knee to the sure, head. It was a knee to नी, the head. या एक नॉकआउट विक्ट्री मिली इस्माइल बॉनफिम को। एंड दैट नी टू द हेड, He आई slapped हैव him, man. आई हैव Slapped him, नो bro. वर्ड्स फॉर हिम। और उनके बड़े भाई गैब्रियल बॉनफिम ने खुद कहा, वी Yeah, आर हियर टू टेक ओवर, वी आर हियर yeah. टू टेक ओवर। Could be होपफुली, right. Could could be be, yes. maybe these two could be the next Diaz brothers. I guess these are the next. I mean, they look both of them. They look really good, man, in their respective और fights. इससे बढ़िया डेब्यू आपको क्या मिलेगा, इससे बढ़िया डेब्यू आपको क्या मिलेगा, और ऊपर से इतनी बढ़िया फिनिश, वो भी टेरेंस Yeah, मैकेनी जैसे लेवल के फाइटर के अगेंस्ट। टेरेंस yeah, मैकेनी आई थिंक टॉप 15 के इन एंड अराउंड घूम रहे हैं लाइटवेट डिवीजन में। सो बहुत बढ़िया था देखना ये इस्माइल बॉनफिम का, प्लस उनके भाई दोनों जीते हैं, तो कंग्रेचुलेशंस yeah. टू बोथ ऑफ देम। एंड लेट्स सी आगे हमें ये फाइटर्स कहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एज यूजुअल हेवीवेट डिवीजन में जेल्टन अल्माइडा ने नॉकआउट किया शमिल जो कि Abdul रशिया Rahimov. से हैं, अब्दुल रकीमोव को सेकंड राउंड में। तो ये भी एक जेल्टन अल्माइडा इज वन टू लुक, Yeah, जेल्टन अल्माइडा इज वन टू वॉच आउट फॉर। yeah, पिछली 4 फाइट हैं यूएफसी में, चारों जीते हैं। yeah, सो देखना दिलचस्प होगा ये फाइटर कहाँ जाएगा। yeah, एंड yeah. बहुत सारे पंडित्स ने ऑलरेडी हेवीवेट डिवीजन के टॉप 5 तक में बोल चुके हैं कि वेरी सून Mm, टॉप 5 में हमें देखेंगे इन्हें। mm. कुछ और जो आपको इस कार्ड में हाईलाइट नजर आया हो टॉनी? Oh, bro. I guess we covered everything. एंड Yeah, I guess. आई बिलीव वॉरली ऑलवेज भी इस कार्ड में फाइट कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah, when he lost to Nicholas Dalby, Yeah, he lost to decision. Nicholas Tabby. And fun fact, Worley always एक वो फाइटर हैं जिन्होंने कोल्बी कविंगटन को यूएफसी में हराया था, उनकी जो पहली लॉस थी, अपार्ट फ्रॉम Yeah, कमारू उस्मान। yeah. His first ever career loss, I guess, it was against Valerie Alves. रियर नेकेड चोक, Mm, yeah. Was it? Let me see. इट्स अ रियर नेकेड चोक, मुझे याद है अभी भी। No, no, no. Like, did Colby ever lose before he lost to Valerie Alves? नो नो नो, नेवर नेवर। Yeah, yeah. उनकी उनकी Yeah, पहली लॉस that's थी। what it's like, yeah. अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज द किंग जिनसे वो हारे हैं, कमारू Yes. उस्मान। Usman. बहुत ही मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी बॉनफिम ब्रदर्स से। एंड जेल्टन अल्माइडा एज यूजुअल उन्होंने नॉकआउट किया, तो Took मतलब care of business. So I hope एज यूजुअल। I hope with this fight, I hope that he reaches at least top 10 नॉट or top 15 of the division. मे बी। Yeah. He, Abdul Hakimov, he's no joke, man. He's a good fighter. So yeah, I hope he'll get at least a top 15 guy, or he'll enter the top 15 rankings. That's what I hope for him. He's a good fighter. I enjoy watching him fight. But then again, it's heavyweight, man. Who doesn't enjoy watching heavyweights fight? एंड अगर सर्गे पाव्लोविच को आप छोड़ दें, तो यूएफसी में 4 फाइट की विन स्ट्रीक पर वो अकेले बंदे हैं, Yeah. अगर आप छोड़ दें सर्गे Mm. पाव्लोविच को। I'm excited to see what 2023 is going to bring for Sergey Pavlovich as well. Really. 100%। I'm sure with one fight, he's one fight away from a title shot. हु? Pavlovich. सर्गे पाव्लोविच, ओके, या। Yeah. That's probably one fight away from a title shot. मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ कर्टिस ब्लेड्स हैज़ बीन द I लीस्ट। know. सबसे ज़्यादा अगर किसी का स्टॉक डाउन हुआ है, बिना फाइट लिए या फिर फाइट करते, वो सारी फाइट जीत रहे हैं कर्टिस ब्लेड। Then make कर्टिस them ब्लेड, fight each other. Simple. आई डोंट थिंक, बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ पिछली 4 फाइट से कि कर्टिस ब्लेड को टाइटल शॉट दे दो, बट समथिंग और द अदर इज हैपनिंग। एंड मुझे लगा था कर्टिस ब्लेड कुड बी द ऑप्शन टू द, That something is named John Jones. यस दैट समथिंग इज कॉल्ड, मुझे लगा था जॉन जोन्स को फाइट में, नो नो इट्स सिरिल गान। जॉन जोन्स को आप डिनाई नहीं कर सकते, बट सिरिल गान की जगह मुझे लगा था अगर उनको रखा जाता उस पोजीशन में, तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, फ्रांसिस नगानु चले गए हेवीवेट डिवीजन से, एंड इन कम्स जॉन जोन्स। सो एक तरफ से खुशी, एक तरफ से दुख। Ah, तो that's गाइस a sport and that is ये life.
Can't help it. ये पूरा रिव्यू था UFC 283 का, मेन पेपर व्यू प्लस प्रीलिम्स एंड अर्ली प्रीलिम्स। Hmm. बहुत इलेक्ट्रीफाइंग डेब्यूज हमें देखने को मिले। टेरेंस मैकेनी का फ्रीकिश नॉकआउट हमें देखने को मिला, और जिल्टन अल्माइडा जैसे कि And we saw the retirement of two legends of the sport, Glover Teixeira and Shogun. हुआ। So, okay, fine. I wish them both happy retirement, and man, आई विश द सेम, एंड होपफुली उन्हें हम एज अ कोच जरूर देखेंगे। टेशेरा तो ऑलरेडी एक obviously, कोच हैं, टेशेरा ऑलरेडी एक कोच एंड ही इज डूइंग फिनोमिनल विद हिज yeah. ट्रेनिंग फैसिलिटी इन कोलोराडो। Mhm. देखते हैं आगे अब क्या होता है। Yeah. गाइस, ये पूरा रिव्यू आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Yeah. एंड दोस्तों, यूएफसी का जो अगला इवेंट होने वाला है, यूएफसी फाइट नाइट सर्गे स्पीवाक वर्सेस डेरेक लुइस, उसमें ब्लैक बीस्ट के अलावा भी आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर द इंडियन ऑडियंस। Indian audience. रोड टू यूएफसी का फिनाले होने जा रहा है, एंड आवर ओन किंग ऑफ लायंस अंशुल जुबली फाइट करने वाले हैं मेन इवेंट में अगेंस्ट जेका सरीगी, लाइटवेट डिवीजन Yes. की रोड टू यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट के लिए। डॉनी, कितने बजे होने वाला है मैच? प्लीज लेट द ऑडियंस नो। So yeah, the preliminary card of this particular fight night is going to start at 8:30 in the morning. So even if you don't watch the other guys fight, I think you'll. It's a Sunday. I think even if you get a hangover, so maybe you would be awake by 10:30 in the morning. So please don't miss our boy. He's fighting. He's fighting for not just himself, but for our country as well. And he's one of the best prospects that we've seen in a long time coming out of this country. I mean, डॉनी ने 10:30 का टाइम दिया, बट अगर सारी फाइट्स अपने टाइम के हिसाब से चली तो प्रॉब्ली जो लास्ट फाइट का आधा घंटा होगा वो मिलेगा अंशुल जुबली को, दैट मींस 11 बजे। सो आधे घंटे पहले से आप ट्यून इन कर लें, बिकॉज़ यू नेवर yeah, नो। make sure you tune in from anywhere. Tune in from anywhere. You can tune in from UFC Fight Pass, or you can Sony Live legally stream. Nobody, no, I don't. Will this be shown on Sony Live? 100%। If it's shown Sony on Live Sony का, Live, then well and good. That's great. You won't have to legally stream that shit. एंड So होपफुली show some टीवी पे support भी for आ your सकता boy. है ये, नॉट श्योर ऑफ दैट, बट लेट मी जस्ट सी। Show नो some सॉरी, support. यूएफसी फाइट पास पे आपको ये इवेंट देखने को मिलेगा, अगर बट फाइट पास के लिए पैसा नहीं है तो illegally stream कर दो, no problem. illegal stream आप कर लीजिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, बट प्लीज डोंट मिस दिस फाइट। Yeah. इट्स वन इन अ मिलियन चांस जो हमें मिला है। अंशुल जुबली, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मेकिंग दैट फार, एंड Yeah. एज ऑलवेज आई थिंक प्रेशर तो जैसा कि इन्होंने कहा अल्टीमेट गाइड टू यूएफसी में, कि प्रेशर उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अंशुल, द होल ऑफ इंडिया इज विद यू, एंड आप यूएफसी में जाएं, एंड डेना वाइट को नमस्ते जरूर बोल के आना इस बार। वेगस में इवेंट हो रहा है तो डेना वाइट विल बी देयर, एंड Yeah. नमस्ते डेना वाइट जरूर बोलने का है, एंड हैशटैग नमस्ते डेना वाइट देखने को मिलेगा हमें बहुत जल्द। Yeah. All right, bro. With that, we're gonna sign out. So good night, everyone. And as always, again, we are reminding, please do not miss 5th of February, 10:30, 11, Anshul Jubli versus Jeka Sarigi, Road to UFC Lightweight Division Final. Please do Yes. not miss it. And it's a wrap. Thank you, Donny. Take care, and we'll see you on 5th of February. Take care, guys. It's a Good wrap. night. As always, follow Donny, follow One Dojo, Short Hair and Lanky Fellow writes articles for them, and MMA India, as always, signing off. Thank you, Donny. Yes. Thank you, everyone. Good night.